Hello everyone. Welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma, and today in this video, we are going to discuss about MEA internship for term 2, the session 2024. So as you all know that MEA announces its internship for 2 terms, that is term 1 and term 2. So term 1 has already started in the month of April this year, and now the term 2 will be commencing from probably September. If you are aspiring for term 2, if your state lies in term 2 slot, so what things you should know, and you should be well prepared beforehand only. So सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितनी भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं. उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप या तो फाइनल ईयर स्टूडेंट होने चाहिए ग्रेजुएशन के, अगर आपके कोर्स करिकुलम में इंटर्नशिप कंपलसरी है तो, या फिर आप बेसिकली मास्टर्स और आई वुड से any research you are pursuing, right? So that is the first thing. And secondly, detailed अगर आपको जानना है कि what are the more essential requirements, so I have made already a full-fledged video on this, so you can find in the description, so you can find it out and just watch that. उसमें आपको और डिटेल में मैंने बताया है, बट ये आप ध्यान रखिए कि आप करंटली अभी एक स्टूडेंट या फिर अगर आप पास आउट भी है तो दैट इज समथिंग यू कैन परस्यू. फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स कैन नॉट grab this internship. Secondly, be well prepared with your SOP, that why you are applying for the internship, that why you want to get into MEA, that statement of purpose, your extracurricular activities and your projects undertaken, your I would say full-fledged application should be ready, right? So उसके लिए भी एक स्पेशल एक मैंने वीडियो बनाई थी for term 1, that how to fill application form. So you will get that whole dashboard format and you can just see that what things they ask in the application form, ताकि आपके पास वो चीज़ें पहले से रेडी हो and you just don't I would say get panic when actually application form is released. So you should be well prepared with your application and everything beforehand. Keep your mark sheets and documents well prepared beforehand. Again, right, do not neglect these things. अगर आपकी mark sheets आपने यूनिवर्सिटी से कलेक्ट नहीं की है या फिर कॉलेज से नहीं की है तो आप उसको कलेक्ट कर लीजिए. So the thing which I want to just clarify with you people is that don't be very much, I would say, inclined towards only one thing. कि अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ये एक internship करनी है तो आप इसके पीछे ही अपना सारा time and energy or just keep on wasting. I don't say that, like it's not good to look something productive. Yeah, it is very good, but look for other internships also, like Niti Aayog or I would say National Center for Good Governance, as they release their internship every month from 1 to 10. So आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो. उसके अलावा बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है जिसके लिए आप इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हो, उसकी मैंने वीडियोस बनाई है. एंड वन वेरी गुड वीडियो आई हैव मेड, लाइक 5 pro tips to fetch government internships. तो आप उसको भी देख सकते हो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. सो मोर वीडियोज रिगार्डिंग इंटर्नशिप विल बी कमिंग टू यू, सो डू वॉच देम एंड ऑल द वेरी बेस्ट. Do subscribe Passion Studies for more such videos to make your career advance, I would say more fulfilled for you, and to rise your future prospects. Thank you so much and all the very best.